Assalamu alaikum, beautiful people. As you know, we have discussed about the soil. First, we'll talk about the introduction, then what is soil, origin of soil, composition of soil, types of soil, and their characteristics. And at the end, we'll discuss about the conclusion. Move towards the introduction. The term soil, which has been originated from the Latin word solum, has different meaning to different professional groups. To an agriculture, it means loose material lying on the earth surface. Loose material that lies on earth's surface is referred to as soil. Disintegration of rocks uh, that results in the formation of soil which can support plant life. To civil engineer, it means all the inorganic material of the earth's surface produced by weathering of rocks being either residual or transported. The study of soil, its behavior and application as the engineering material is known as soil mechanics. Terzaghi is the father of soil mechanics. Move towards the question, what is soil? Soil is the mixture of minerals, organic matter, gases, liquids, and the countless organisms that together support life on earth. These are the things that we had already discussed in our classroom. It is the unaggregated or uncemented deposits of minerals or organic particles or fragments covering large portion of the earth crust. It includes widely different materials like powder, sands, clay, gravels, and silts, and the range in the particle size in the soil may extend from grains only a fraction of micron, that is 10 to about -4 in diameter, up to large size boulders. Origin of soil. Geological circular soil formation include erosion, transportation, deposition, and upheaval. First of all, we'll talk about the soil. As we had studied in previous video, soil is composed of both organic and inorganic matter, and it is essential for life on earth to exist. The soil type I have studied in brown earth. Brown earth are most common soil types in Ireland and are very fertile. If someone asks you about the most fertile type, then it's brown earth. Soils are the composition of mineral particles, 45%, organic matter 5%, air 25%, and water 25%. Mineral particles. It is the largest ingredient that make up approximately 45% of the soils. These are the things that we had already discussed in your previous video. They are the original rock that got broken down by weathering and erosion to form the basis of soil. Composition of soil also includes air and water. Air is vital for the survival of microorganisms, and without these, there would be a shortage of human. Brown earth have a granular structure which allow for good aeration. Plants cannot survive without water present in the soil. If we'll move towards the texture, appearance of soil, how soil feel by touching. The proportion of sand, silt, and clay determines the soil texture. The ideal combination for soil texture is roughly 40% sand, 40% silt, and 20% clay, creating that known as loamy soil. Composition of soil also include organic matter. Organic matter is decayed vegetation that is broken down by microorganisms in the soil to form humus. It's humus, and it consists of approximately 5%. Color. Lighter colored soils deflect sunlight while dark soils absorb more light. This is the most important point. This allows the soil to heat up much more quickly and encourages seed germination and crop growth. pH value. It measures the acidity of a substance. The ideal pH value for the agriculture is 6.5, which is slightly acidic. If we'll move towards the type of soil, there are 15 types of soils: black soil, red soil, laterite soil.
desert soil, mountainous soil, saline soil or alkaline soil, peaty or marshy soil, cohesive soil, residual soil, alluvial soil, marine soil, aeolian soil, loam soil, clay soil, and glacial soil. If we'll talk about the black soil is also known as regular or black cotton soil, dark gray to black in color, high clay content is present, highly moist, retentive, develops cracks in summers, covers 5.4 lakh square per kilometer, highly suitable for cotton, rich in iron, lime, calcium, magnesium, carbonates, and aluminum. Here, its composition, its color, and the area that covers by it, and the most preferable vegetation is written. About the soil. Red soil formed due to the weathering of old crystalline rocks. Old crystalline rocks weathered and formed the soil, that is red soil, more sandy and less clay, rich in iron, small amount of humus, poor in phosphorus, nitrogen, and lime. It is slightly acidic and do not retain moisture. 3.5 lakh square per kilometer area and porous and friable. Move towards the laterite soil. Laterite soil, Latin word meaning brick, formed under high temperature and rainfall with wet and dry spell. वेट एंड ड्राई स्पेल के साथ हाई टेम्परेचर के अंदर प्रोड्यूस होती है. सिलिका इज लीच ड्यू टू हाई रेनफॉल. व्हाट इज लीचिंग? टेल मी इन कमेंट सेक्शन. रेमनेट्स होते हैं बकिया जात ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड लेफ्ट बिहाइंड इज नोन एज लेटराइट. जो रेमनेंट्स, जो बकिया जात आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रह जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? लेटराइट्स. ब्राउन टू येलोइश कलर होता है इसका. बिकम हार्ड व्हेन एक्सपोज टू एटमोस्फेयर, यूज्ड एज बिल्डिंग मटेरियल. दिस इज अबाउट डेजर्ट सॉइल. डेजर्ट सॉइल कंटेन सॉल्युबल सॉल्ट. डेजर्ट सॉइल के अंदर क्या होते हैं हमारे पास? सॉल्युबल सॉल्ट्स ओरिजिनेटेड बाय मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड विंड डिपॉजिट्स. किस तरह से ओरिजिनेट होते हैं? मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन एंड विंड डिपॉजिट से. पोरस एंड कोरस इन नेचर होते हैं. 90% सैंड होती है एंड 5% क्ले होती है. रिच इन नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स होते हैं. पुअर होते हैं इन नाइट्रोजन एंड ह्यूमस. फ्राइबल होते हैं, सैंडी होते हैं एंड लो मॉइस्ट कंटेंट. 1.4 लाख स्क्वायर पर किलोमीटर के ऊपर होते हैं. माउंटेनियस सॉइल. माउंटेनियस सॉइल जो है फाउंड होती है हिल स्लोप्स के अंदर. ठीक है. फाउंड बाय डिपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम फॉरेस्ट. ऑर्गेनिक मैटर जो कि डिपॉजिट होता है फॉरेस्ट से, वहाँ से ये फॉर्म होती है. ह्यूमस रिच सॉइल होती है. पुअर इन पोटाश एंड लाइम होती है. एरियाज इसमें आ जाते हैं असम, कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. क्रॉप्स जो हैं इसकी हैं टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस एंड ट्रॉपिकल फ्रूट्स. Saline and alkaline soil. Saline and alkaline soil contain salts. कौन कौन से salts होते हैं हमारे पास इसके अंदर? सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम. इनफर्टाइल होती है, अनफिट होती है फॉर कल्टीवेशन. सैंडी टू लोमी होती है इन टेक्सचर. एरियाज पार्ट्स ऑफ गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड महाराष्ट्र. मूव टुवर्ड्स द पीटी एंड मार्शी सॉइल. पीटी एंड मार्शी सॉइल अकर इन ह्यूमिड रीजन्स के अंदर पाई जाती है. फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर. ऑर्गेनिक मैटर की एक्यूमुलेशन के रिजल्ट में बनती है. ब्लैक इन कलर होती है, हाईली एसिडिक होती है, हैवी होती है. कौन से एरियाज हैं जिनके अंदर ये पाई जाती है? कोट्याम, एलेप्पे इन केरला, कोस्टल ओराइसा एंड संदरबांस ऑफ WB. Move towards the cohesive soil. A sticky soil term indicate कर रही है, name indicate कर रहा है that it is sticky in nature such as clay or silt. Its shear strength equals about half its unconfined compressive strength. जो इसकी shear strength होती है वो equal होती है इसकी half unconfined compressive strength के.
Soil in which the absorbed water and particles attraction act such that it deforms plastically at different water contents are known as cohesive soils और clay. Different water content पे ये deform हो जाती है. These soils possess higher plasticity, e.g. clay and plastic silt. Residual soils. Residual soils are those that remain at the place of their formation as a result of the weathering of the parent rock. पेरेंट रॉक की वेदरिंग के रिजल्ट में जो सॉइल्स अपनी पोजीशन के ऊपर रह जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? रेसिडुअल सॉइल्स. द डेप्थ ऑफ द रेसिडुअल सॉइल्स डिपेंड्स प्राइमरली ऑन क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द टाइम ऑफ एक्सपोजर. एक्सपोजर के टाइम पे डिपेंड करता है. इन टेम्परेट जोन्स रेसिडुअल सॉइल्स आर कॉमनली स्टिफ एंड स्टेबल. An important characteristic of residual soil is that the size of grain are indefinite. Alluvial soil. Alluvial soil हमने पहले भी पढ़ा था कि जो soil streams के कैरी करने से, ठीक है, वाटर के डिस्पर्स होती है, उसे हम alluvial soil कहते हैं. The soil that is formed when a soil carrying stream gradually loses its carrying capacity with decreasing velocity. जब उसकी velocity decrease हो जाती है तो उसकी carrying capacity भी decrease हो जाती है. In slowing down, a river does not have sufficient power to keep the large particles of soil suspended. इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो हमारे पास लिवर होता है रिवर, उसके अंदर सॉइल पार्टिकल्स को कैरी करने की कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है. ठीक है, दिस पार्टिकल्स सेटल टू द रिवर बेड, और ये जो हमारे पास रिवर बेड होता है उसके ऊपर ये पार्टिकल्स सेटल हो जाते हैं. फर्दर डिक्रीजेस इन वेलोसिटी काज स्मॉलर पार्टिकल्स टू सेटल, और जब वेलोसिटी जैसे जैसे कम होती जाती है स्मॉलर से स्मॉलर पार्टिकल्स जो हैं वो सेटल होते जाते हैं. These particles are deposited finally at the mouth of the river. They form deltas of fine-grained soil. ठीक होगी बात. Move towards the marine soil. Marine soil is formed from materials carried into the seas by streams and by materials जो कि स्ट्रीम से कैरी होते हैं. ठीक है, मटेरियल्स इरोडेड का मतलब ये होता है कि जिनकी सरफेस जो है वो ख़राब हो चुकी होती है फ्रॉम द बीचेस बाय द टाइडल एक्शन ऑफ द वेव्स की टाइडल एक्शन की वजह से जिनकी सरफेस ख़राब हो चुकी होती है. पार्ट ऑफ द मटेरियल इज कैरिड आउट एंड डिपॉजिटेड इन डीप वाटर. पार्ट इज हीप्ड अपॉन द बीचेस अलोंग द कोस्ट. एलियन सॉइल. विंड. A soil that is transported by one place to another by wind, e.g. sand dunes and loess. It's not loess, it's actually loess. Loam. Loam is the soil composed of sand, silt and clay in relatively even concentration, about 40 and 20% concentration respectively. Loamy soils are humus, generally rich in humus. ठीक है, infiltration and drainage that silty contains, easier to till than clay soils. Loamy are greatly moist and retain water easily. Clay जिससे हम बर्तन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं चिकनी मिट्टी. Clay is a naturally occurring aluminium silicate composed of primarily of fine grained minerals. Clay deposits are mostly composed of clay minerals, a subtype of phyllosilicate minerals, which impart plasticity. Plasticity का मतलब ये होता है हार्डनेस प्रोवाइड करना, और हार्डनेस के साथ साथ इलास्टिक इन नेचर भी होना. and hardens when fried or dried. They also may contain various amounts of water trapped in the minerals structures by polar attraction. Organic materials which do not impart plasticity may also be a part of clay deposits. Glacial soils. Glaciers carry with them soils varying in fine grain to huge boulders. Soil get mixed with the ice and are transported far away from their original position. This soil is known as glacial soil. Drift is a general term used for the deposits made by glaciers. Stay motivated. God bless you. Allah Hafiz. If you have any queries, then discuss in the comment section. Allah Hafiz.